से सैम आल्टमान से, उसे कोई आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करने की जरूरत नहीं होगी, कोई भी टाइम लेने की जरूरत नहीं होगी। आपके अवेलेबल टाइम पे ये लोग अवेलेबल रहेंगे। दोस्तों, प्लीज सैम आल्टमैन से बात करके एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या है इस टूल का रिस्पॉन्स। चलिए, सैम आल्टमैन में मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट प्रेस किया। और नेक्स्ट प्रेस करने के बाद आप अपना चैट मोड सिलेक्ट कीजिए, कॉल सिलेक्ट कर लीजिए, या लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। इंग्लिश, हिंदी भी अवेलेबल है, लेकिन अभी हिंदी में बात नहीं करेंगे, हिंदी पता नहीं समझ में आएगी नहीं। और माइक्रोफोन अपना आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपके पास माइक्रोफोन है, ठीक है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप लैंग्वेज मॉडल से सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने चैट जीपीटी को सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, सैम आल्टमैन जी आ चुके हैं। Hi, my friend. What brings you here today? Hi Sam, I'm fine. Actually, I am more curious about artificial intelligence and Chat GPT. That's why I am here. सैम आल्टमैन मैंने बोला है कि मैं क्यूरियस हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी को लेकर के। अभी देखते हैं कि सैम आल्टमैन भाई साहब क्या रिप्लाई करते हैं और क्या। It's great to hear about your interest in artificial intelligence and jet activity. AI has the potential to revolutionize many fields, including aviation. Could you please clarify what specific aspects you're curious about? This will help me provide a more tailored response. Yeah, I am more curious about you that how did you found OpenAI organization, and what how did you get inspired to create a Chat GPT AI model, large language model? मैंने इनसे पूछा कि ओपन एआई आपने कैसे खोला और चैट जीपीटी कैसे बनाया आपने। तो वैसे में एडवान भाई साहब जो है कुछ सोच रहे हैं, सोचने के बाद ये रिप्लाई देंगे इसको। Smiles knowingly. I appreciate your curiosity. I'm glad to see your enthusiasm for AI and equity, two areas I'm deeply passionate about. My journey with OpenAI started with a belief in the transformative power of artificial intelligence. We wanted to ensure that AI benefits all of humanity. To clarify, are you asking about the founding of OpenAI or how we were inspired to develop GPT, generative pre-trained transformer models? Both are fascinating topics, and I'd love to dive into the one you're most interested in. As for GPT-3, it was born out of the quest to understand and replicate human-like text generation. It's an embodiment of the marvels we can achieve when we push the boundaries of what's possible. Can you tell me more about your interest in AI and language models? Yeah, I am more interested about you. That can you tell me about your study, about your graduation, about your subjects, and about your start of your journey? We want to know more about that. वैसे मैंने पूछा हुआ है, देखिए क्वेश्चन थोड़ी देर सोचेगा फिर उसके बाद हमको। I'd be happy to share. I attended Stanford University, where I studied computer science. However, I left before completing my degree to start a company called Looped, which was a location-based social networking mobile app. This was the beginning of my entrepreneurial journey. Pauses thoughtfully. Is there a specific aspect of my educational or entrepreneurial journey you're interested in exploring further? No, that's okay. Actually, I want to know about your statement. Once you told that Indian are not capable of generating a model like Chat GPT, so I want to know about that. Why did you spoken that statement? कुछ अगर बोला था इन्होंने कि इंडियन चैट जीपीटी नहीं बना सकते हैं, तो वो उसके बारे में थोड़ा पूछ के देखता हूँ क्या है बता रहे हैं। I'm sorry for any misunderstanding, but I don't recall ever making such a statement. I firmly believe in the global potential of AI development, and India has a rich talent pool that is more than capable of contributing significantly to this field. Is there a specific aspect of AI development in India you're curious about? Yeah, actually, for anything, any technology to move further, to take it forward, literacy is four things, okay? But in India, like literacy rate is not 100%. So how do you think that this AI in India will how it will be increased? How it will be reach to the normal people, to the general public? Nods thoughtfully. That's a very insightful question. Is that a question? While it's true that literacy is a crucial factor for technological advancement,
It's important to remember that literacy isn't just about reading and writing anymore. Digital literacy plays a significant role too. In India, the rapid increase in smartphone penetration and internet usage is promising. As for AI, it can actually help bridge the literacy gap. For instance, voice recognition technology can assist those who can't read or write. And as more people get accustomed to digital tools, the reach of AI will inevitably expand. What do you think are the biggest challenges for AI adoption in India? Thank you, Sam. Thanks for your time. And we will talk later in another session. Thank you. अभी मैंने इनको थैंक्स बोल करके मतलब बाद में बात करने के लिए बोल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी बात कर सकते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी से, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा सेलिब्रिटी कौन सा है, उससे बात करेंगे। और चलिए दूसरा हम लोग लेते हैं किसी को। एलन मस्क से बात करनी है, बताइए। अगर एलन मस्क से बात करनी है तो करें, ठीक है। या स्टीव जॉब्स से करनी है, या फिर लोकी से करनी है। लोकी से करनी है तो लोकी से भी कर सकते हैं, चलिए लोकी से करते हैं। लोकी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, माइक्रोफोन सेलेक्ट कर लिया और अपना मॉडल सेलेक्ट कर लिया हमने। आपका जी अगर फ्री है तो जीपीटी 3.5 सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा जीपीटी 4 सेलेक्ट करना कोई जरूरी नहीं है। चलिए पेस्ट करते हैं, गेट स्टार्ट करते हैं, लोकी के द्वारा पूछते हैं। Hi, my friend. What brings you here today? Hi Loki, how are you? And where are you right now? Because all the peoples on your planet are searching you, okay? Yeah, and you are disappeared since long. So can you tell me where are you present at this time? देखते हैं लोग क्या हो सकता है। Ah, the curiosity of mortals. Ah, the perpetual game of hide and seek. Smirks I am, as they say around Smirks. Yet, isn't the charm of mystery its very uncertainty? But tell me, why such interest in my whereabouts? But tell me, why such curiosity about my whereabouts? Are you planning to join the hunt for the elusive god of mischief? Yeah, we are curious about you because we like you, because you as a villain we like you in Thor movie, okay? That's why I am asking that since long day you are disappear. So as your admirer, I want to know that where are you, what are you doing these days, and where is Thor, and where is your sister Hela, what about your father? Just I need to know all the things, man. Ah, a flurry of inquiries, how delightfully chaotic. Smirks. You're right. I do have a penchant for vanishing acts, don't I? As for Thor, my dear brash brother, he's likely off somewhere being the hero. And my dear sister Hela, well, she's not one for family reunions. As for dear old Odin, pauses, looking distant. Well, let's just say his reign has ended. But tell me, why such a sudden interest in the affairs of Asgard? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने लोकी से बात की, मैंने सैम आल्टमैन से बात की। अभी आप भी इसी तरीके से बात कर सकते हैं अपने सेलिब्रिटी से, आप एलन मस्क से बात कर सकते हैं, स्टीव जॉब्स से बात कर सकते हैं। आप जितने भी इस एप्लीकेशन में, इस एआई के टूल में जितने भी पर्सनालिटी हैं उनसे आप बात कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही मजा आएगा बात करके। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने सेलिब्रिटी से बात करें और जिंदगी के मजे लो। जय हिंद, जय भारत।